Act 5 begins in front of the castle of Portia in the garden. So this is the scene where Lorenzo and Jessica, they are relaxing uh, in the garden of Portia, and Portia and Nerissa, they have gone to save Bassanio and Antonio in the court scene. So this is a very calm and quiet scene. There's a moonlight, there's a river in the garden. So Lorenzo and Jessica, they are in a very romantic atmosphere with a romantic mindset. So Lorenzo is saying, the moon shines brightly, and such a night when the sweet wind did kiss the tree. So here are few allusions. Lorenzo is saying that moon is falling on the river. There's a river here, water. The moonlight is falling on the garden, and the sweet wind is kissing the tree. There's a moonlight falling on the river, on the garden, and the wind is very sweet. It is touching the trees. So this scene is in contrast with the last scene, which had lots of the tense movement, which was a scene in which Anthony was about to be killed. But here in this scene, we find it's very calm and quiet, just a contrast to the Act 4, which was full of intensity, full of drama. It's calm, quiet, and a very serene scene. So the very first two lines sets the atmosphere of this scene, which is very calm and quiet. Moonlight is there all around, and the wind is touching the trees. The moonlight is shining very brightly, and the night is very bright, and in such a night, the wind is touching the trees. And they did make no noise in such a night. And Troilus mounted the Trojan war and looked at the Grecian tent. So now he is talking about a story from Greek mythology, and side is sold towards the Grecian tent. So the story goes like this. Troilus, Cressida, they were in love with one another. Troilus loved Cressida, so they were in love. But Cressida was given to the enemy, because when the enemy is defeated, the women also become the property of the people who succeed. So Troilus was into the Grecian tent. Greece ka tent mein thi. So Troilus used to climb on the mountain and used to look at Cressida every night. So when Lorenzo is along with Jessica, there is a moonlit night. So in the similar moonlit night, a lover called Troilus went on the top of the fence wall, Troy ke wall se, Troy at famous walls. So Troilus climbed on the walls, and he was trying to look at his beloved. So according to some historian, Troilus one day found that Cressida is happily making love to the enemy. So Troilus was very disappointed. Troilus used to think that Cressida has been abducted, so she must be sad, so she must be disappointed, so she must be suicidal. But to his utter shock, Troilus was disappointed that Cressida has accepted the life on the other side of the wall. Enemy ke tent mein, he is living happily, making love to the enemy. So there is a word called side. His soul towards the Grecian tent. So when he looked at the Grecian tent, Troilus, he was very disappointed because his beloved Cressida was making love to the enemies. So he indirectly, not directly of course, indirectly, just for the sake of fun, Lorenzo is indirectly trying to say that women are not faithful. Indirectly, women also include Jessica. So Troilus was cheated by Cressida, according to the story. Indirectly, he is saying that Jessica can be
a frail lady, a lady who is not loyal. So Troilus was climbing on the wall, looking at his beloved, but he found that his beloved has become somebody else's beloved. That too happily, willingly. So on such a moonlit night when Troilus was watching Cressida from the walls of the Troy, on such a moonlit night, Lorenzo is in garden with Jessica. Next story. So Cressida was lying on the other side of the wall, happily making love to the enemy. Now it's time for Jessica to say. It's like they are doing a kind of competition of Sairi. So one is quoting one story from mythology, the other is quoting the other story from mythology. Lorenzo is saying कि ऐसे moonlit night में Troilus Cressida को देखा था, वो धोखेबाज हो गई थी. ऐसे moonlit night में he climbed on the wall of Troy to see in the Grecian tent that she is making love to the enemy. Jessica is saying in such a moonlit night, Thisbe walked over the dew and saw the lion shadow. So there's another story of Thisbe and his lover Pyramus. So the story goes like this. First listen to the story, and if you have the book, if you are already watching the video, I request you have your own book, and so write it down if you feel like. Without book, it might be a bit difficult for you to follow. So here, Thisbe was in love with a person called Pyramus. So they had decided that they will meet in the jungle. So on the appointed time and date and place, Thisbe came before time. Or maybe Pyramus was late. So Thisbe fearfully overstood the dew. Thisbe is the name of the girl. She was full of fear. She was walking on the dew. And she saw the lion's shadow himself and ran into dismay. So Thisbe saw a lion shadow before herself. Lion का shadow वो देखी and she ran dismay. So while she was running away, her scarf got entangled with the branches of the tree, and on the branches of the tree there was some spot of blood. So Thisbe and Pyramus, they were supposed to meet in the jungle. So Thisbe came before time. Pyramus had not yet come. So while Thisbe was waiting for her beloved, Pyramus, एक lion आया. Okay. And when Thisbe saw, she ran away. While running, she got some bruise mark, कुछ cuts हुए, और कपड़ा फट गया, चुनरी फट गया, whatever scarf got full of blood, and it fell on the path where she ran away. Now, when Pyramus came, he thought that Thisbe is actually dead because of the blood. So out of that heat of the moment, out of that overwhelming emotion, he killed himself. Now when Thisbe came back after searching the whole jungle, she found that Pyramus mar chuka hai, Pyramus is dead, so she killed herself. This happens in love all the time. So Thisbe was waiting for her beloved in a moonlit night. So Thisbe was so committed. So the example given by the boy, Lorenzo, is indirectly trying to say that women are not loyal. And the example given by Jessica is to establish that men are not loyal or women are very loyal. So Thisbe तो वफादार थी. Thisbe अपने प्यार के लिए अपना जान दे दी. Pyramus very late से आया था. So Pyramus did not come on time. As a result of which Thisbe died. So Jessica के example में, in the example of Jessica, we find that Thisbe is loyal, but Pyramus was probably not as committed as the beloved. In such a moonlit night, Dido, with a willow in her hand, stood on the sea bank and begged her love to come to Carthage. So this is story number 3. So Dido was a queen of Carthage. Okay. So Dido was in love with a person called Aeneas. Dido was in love with a person called Aeneas. So Dido was actually married. Okay, she was a queen, as I told you, but she fell in love with somebody else. So this Aeneas
was in love with Dido. So Aeneas was a warrior. So Aeneas had promised Dido that he will conquer a few more kingdoms and then he will come back. So Dido, the queen of Carthage, used to stand with a willow in her hand. Willow is the name of a tree. So willow is a symbol of sorrow in European culture, in England. So she used to stand at the seashore of Carthage. Again, she used to at the sea bank and weft her love. वो विलो ट्री लेके हाथ का इशारा करती टू कम अगेन टू कार्टेज. तो वो अपने बिलवेड को एनियस को ये मतलब साइन देती कि if you are waiting for me, I'm still there, I'm still there, I'm still there. This time Lorenzo has given a better example in which girls are not always uncommitted. So in such a moonlit night, Dido, was the queen of Carthage, was standing with a tree called willow in her hand on the seashore of Carthage and waving her love. And see, हाथ का इशारा कर रही थी अपने बिलवेड को काटे जाने के लिए. So the point is, Lorenzo is saying about Dido, जो अपने beloved Aeneas का वेट कर रही थी कार्टेज सी के seashore पे. Okay. So in such a moonlit night, Lorenzo and Jessica is lying in such a moonlit night. Dido was waiting for her beloved in such a moonlit night. Troilus went on the top of the wall to look at Cressida. Cressida was making love to somebody else. In such a moonlit night, Thisbe was waiting for her beloved Pyramus in such a moonlit night. So this is kind of competition. Moonlit night, moonlit night, moonlit night. Lorenzo is saying, in such a moonlit night, Dido was waiting for her lover Aeneas, so that he will come back. In such a moonlit night, Medea gathered her, enchanted her, and he did renew Aeson. Okay, so there's another story of Medea and Jason. Jason was one of the Argonauts in Greek mythology. He was a fighter. Name of the fighter group of fighters are called Argonauts. So Medea knew which particular magical, enchanted means magical medicines, herbs, plants can cure or renew Aeson. Aeson had some kind of incurable disease. He was losing his age and he was degenerating and he would have died. But Medea, the wife of Jason, they went into the jungle in a moonlit night. और moonlit night में वो संजीवनी बूटी जैसा कुछ हर्ब खोज के लाए जिससे एसन का मतलब डीजनरेशन को रीजनरेशन किया. So ऐसे moonlit night में Medea saved her father-in-law's life when she was going and searching the magical herb in the jungle. In such a moonlit night, Dido was waiting for her lover. In such a moonlit night, Troilus was waiting for Cressida on the top of the wall of Troy. In such a moonlit night, Thisbe was waiting for her Pyramus, for her lover Pyramus. So this is the competition of moonlit night, moonlit night. In such a moonlit night, now चार comparison हो गया Thisbe Pyramus का, Dido Aeneas का, Medea और Jason का. Okay, so चारों comparison के बाद, now they are talking about themselves. So you have to remember this for exam purpose. They will ask you, okay, explain the story of Medea. So you have to say that Medea was a wife of Jason who went to search the magical herb to renew her father-in-law. Jason के पापा का नाम है Aeson. So Medea had the power to know which magical plant can cure her father-in-law. ठीक वैसे ही committed lover थी Dido. वो भी वेट कर रही थी Aeneas का. So Aeneas and Dido story you have to remember. Then you have to remember the story of Thisbe and Pyramus, and then you have to remember the story of the first story, that is Troilus and Cressida. So all these four Greek mythological story are all about love and romance. Thereby, this is a romantic comedy creating an atmosphere of romance, creating an atmosphere of love, creating an atmosphere of commitment, trust. Though some of them are not, but that is said in a
satirical tone, that is out of a kind of teasing attitude. So this scene is in contrast with Act 4, which had no love, which had, full of harsh realities of life. It was a courtroom where one was going to kill the other, uh, where one is forced to change his religion, where one is forced to uh, give up everything he has, all his properties are taken away. It was a kind of, not kind of, it was a very tragic scene, but it's a comedy. So the Shakespeare knew he can't end his book with tragedy. So in Act 5, he creates an atmosphere of comedy, love, music, romance. Music will come soon. So Lorenzo and Jessica, they are in a moonlit night in the garden of Portia's bungalow. And Lorenzo and Jessica, they are talking about moonlit night. So Lorenzo is saying, in such a moonlit night, did Jessica steal from the wealthy Jew with an unthrift love that ran from Venice? So Jessica is saying, ऐसे ही अंधेरे रात में, sorry, moonlit night में, Jessica चुप्पे चोरी अपने पापा का सारा दौलत लेके भाग आई थी with unthrift love run from. This Jessica had no thrift in love. So Jessica ran away. Means indirectly, here Lorenzo is saying that Jessica was not very wise. It ran away from there. As far as Belle went. In such a night did Lorenzo swear he would love, and stealing her soul with many vows of love, but not a true one. Lorenzo said unthrift, not thrift, to Jessica. Now Jessica is saying कि ऐसे अंधेरे रात मतलब moonlit night में Lorenzo ने कसम खाया था बहुत बार that when he was stealing her soul, when he was expressing his love, that he will love her infinitely with many vows of love. He took lots of oath, but not a true one. So Jessica is saying लोरेंजो ने ऐसे मूनलिट नाइट में हजारों कसम तो खाए थे लेकिन एक भी सच्चा कसम नहीं. It's a teasing atmosphere between a boyfriend or a girlfriend or a husband or a wife, where Jessica is saying, you had so many oaths of love, but not a true one. You stole my soul. And Lorenzo is saying, you are not thrift, you are unthrift. Means thrift मतलब होता है जो इंसान संभल के खर्च ना करे, जो बहुत ही frugal ना हो. और जेसिका ने तो बंदर खरीदा था और क्या क्या खरीदा था. She was really not truthful, so she was very untruthful. So Lorenzo is saying Jessica is not unthrifty. Jessica is saying Lorenzo has taken many oaths, but not a true one. In such a night did Jessica, like a little shrew, clever, slander her love, and he forgave her. So Lorenzo is saying ऐसे अंधेरे रात में moonlit night में, romantic night में Jessica ने बहुत joke किया, slander her love, ने said negative about her love मैंने love her, but he forgave. So Lorenzo is saying ऐसे moonlit night में Lorenzo forgave Jessica because she was slandering her lover. मतलब जेसिका मजाक उड़ा रही थी अपने लवर का, लेकिन लवर ने उसको माफ कर दिया. इतने में while they were enjoying this moonlit night, they suddenly heard the sound of somebody walking. So the sound of footstep was heard. So Jessica is saying, I would have out-nighted you. I would have defeated you in this competition of ऐसे moonlit night. But अगर कोई नहीं आता तो, मतलब कोई आ रहा था. So Jessica is saying, I would have out-nighted you. मतलब I would have defeated you if nobody had come. अगर कोई नहीं आता तो हम ये competition में तुमको हरा देते. But I hear somebody is coming. Jessica is saying, I hear somebody is coming. Lorenzo, who comes so fast in the silence of the night? Lorenzo is saying, कौन है अंधेरे रात में तो जल्दी जल्दी आ रहा है? A friend. A friend? What friend? Your name, I pray you. What is your name? अंधेरे रात में बोलते कौन है? कौन? Actually, this is also a technique to make the audience aware. जब जाकर Stefano is my name, and I bring what my mistress will be before the break of the day. They are saying कि Stefano मेरा नाम है, and I bought the news from my mistress. मतलब that she will come here before morning. The Portia, mistress refers to Portia, that Portia will come here before the starting of the day. She don't stray from one holy crosses to the other, she kneels and prays. मतलब वो एक चर्च से क्रॉस, मतलब चर्च में क्रॉस होता है ऐसे. So she is going from one cross to the other, she is praying and kneeling down. चर्च में kneel down होकर pray करना पड़ता है for her happy marriage.
Stefano has brought the news that Portia will be here before the starting of the day, और वो जगह जगह जाके प्रेयर कर रही है नील डाउन होके और अपने हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, और वो सुबह में आ जाएगी. रंजय सिंह और कोई उसके साथ ही कौन सी नन बट ए होली हर्मिट एंड हर मेड. स्टेफनो सिंह के पोर्शिया के साथ एक प्रीस्ट है और उनकी सर्वेंट नईसा है. सो स्टेफनो सिंह इज मास्टर मतलब बसानियो रिटर्न. रंजय सिंह ही इज नॉट, मतलब अभी तक बसानियो नहीं आए हैं. नॉर वी हैव हर्ड फ्रॉम हिम. नरेंद्र सिंह वो आए भी नहीं है और उनसे कोई न्यूज भी नहीं आया. वी हैव नॉट हर्ड, मैंने नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम. बट वी गोइंग, आई प्रे जेसिका द सेरेमनी लेट अस प्रिपेयर सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस. नरेंद्र सिंह चलो हम लोग रूम में जाते हैं, मतलब अपने घर में जाते हैं, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग इन द गार्डन. सो दे आर सेइंग लेट अस गो इनसाइड द castle and prepare the welcome for the mistress. मतलब लोग जाके अपने मिस्ट्रेस मतलब जेसिका के लिए वेलकम करते हैं. इतने में लैंडस्लॉट आया तो जोकर. होला होला सोला सोला होला होला होला. हु कॉल्स सोला सोला? डिड यू सी मास्टर लोरेंजो, मास्टर लोरेंजो, मास्टर लोरेंजो? तो वो अंधेरे में पूछ रहा है कोई मास्टर लोरेंजो को देखा? मास्टर लोरेंजो. लोरेंजो बोला लीव हेलोइंग, मैंने शाउटिंग, आई एम हियर मैन. सोला सोला वेयर वेयर? अंधेरा है ना. बोला कहाँ कहाँ? तो लैंडस्लॉट इज सेइंग टेल हिम देयर इज अ पोस्ट फ्रॉम माय मास्टर. लैंडस्लॉट बोल रहा जो भी हो लोरेंजो को बता दो कि एक मैसेज आया है, पोस्ट में मैसेंजर आया है, which has brought his horn is full of good news. मतलब horn is a idiom which means कि कोई अच्छा खबर लाते हैं तो उसको बोलते हैं horn of good news. पहले जमाने में horns में रख के ड्राई फ्रूट्स रख के खबर भेजा जाता था. Since then this phrase horns of good news. So Lancelot is saying कि एक मैसेंजर आया है जो ये खबर लाया है that my master मतलब बसानियो will be here before morning. So Lorenzo is saying to Jessica, Jessica, let us go in. And in there expect their coming. मतलब चलो हम लोग रूम में मतलब कासल में जाते हैं और there let us welcome our master मतलब बसानियो and mistress Jessica. Yet no matter. फिर वो बोल रहा हम लोग अंदर क्यों जाएंगे? फिर वेलकम करने के लिए तो बाहर ही आना पड़ेगा. So let us go. Why should we go in? Let us wait here only. My friend Stefano, I pray you, within the house your mistress is at hand. So he's saying mistress आने वाली है, जाओ. Bring music into the air. मतलब तो म्यूजिशियंस लोग को बोलो म्यूजिक बजाने के लिए. Now Shakespeare will make lots of comment about significance of music. Okay, like in 12th Night, the first line is if music be the food of love, play on. So here Shakespeare will talk about the significance of music in our life. So much so it will appear as if Shakespeare is a lawyer fighting a case to justify music. Okay. So, and secondly, it's a romantic comedy. And since the last scene has no romance, no comedy, so Shakespeare seems to have, in this Act 5, he is overdoing about music. So, how sweet the moonlight sleeps upon the bank. So, the moonlight is falling on the river bank. Moonlight, like the river I told you in the garden is a small, not river, but a chasm where water flows. So moonlight is falling on the water body. So he's saying, Stefano chala gaya, Lorenzo saying to Jessica, that Jessica, your moonlight is sleeping on the bank. Now why not falling? Because here there's a reference to goddess Dinah. Okay, goddess Dinah fell in love with a person. So every night she used to come and sleep with her lover called Endymion. So Dinah is a goddess of moon hunting. Okay. So एक दिन Dinah moon goddess hunting पे निकली थी. So she saw a very young handsome man called Endymion and she fell in love. Since then every night moonlight comes to when a moon Dinah goddess अपने moonlight के through अपने beloved से मिलने आती. इसीलिए what sleeps, not falls. So the moonlight is sleeping. When the moonlight, when Dinah is sleeping with her Endymion. Here we will sit. So we are saying that जहाँ ये दो lover, मतलब Endymion along with her lover Dinah is making love. Let us sleep there. Here we will sit and let the sound of music creep into the ear. So he's saying एक धीरे धीरे music बजाओ, धीरे धीरे कान में, not
Not all those pop song music. Okay, soft music. Not those. Are you ready? Not those kind of music. Not those. You know, rap music, but soft music, which will creep and slowly enter into my ear. Soft stillness and the night becomes the touches of harmony. So Lorenzo is saying कि जहाँ soft stillness होता है, जहाँ harmony peace होता है, soft stillness and the night becomes the sweet of harmony. मतलब ऐसे atmosphere में जहाँ night हो, खामोशी हो, ऐसे situations में सब कुछ अच्छा लगता है. Sit Jessica, sit. He's saying, look at the floor of heaven. Floor of heaven is sky. It's inlaid with patterns of bright gold. He's saying, Jessica, आसमान में देखो. You see, Lorenzo is saying to Jessica, look at the sky. It is inlaid with patterns of bright gold. देखो आसमान में कितना सारा सितारा. ऐसे लग रहा है it is designed with bright golds. There is not but one orb which can behold, but in the motion sits like an angel, still querying to the green-eyed cherubim. So he's saying, Jessica, आसमान में देखो, there are so many stars. He's saying there's not a single orb in a heavenly body, which you see, but in a motion they are singing like angel. So here he means to say that हर एक heavenly body में एक musical rhythm है. So all heavenly bodies, they are singing or they are playing music or they are cosmic happiness to one another, still querying, singing to the green-eyed cherubim. So all, there is one heavenly body singing for another heavenly body. This is compared to cherubim, that means angels in heaven, singing for another angel. Let me explain it once more. Lorenzo is saying, look at the floor of heaven, look at the sky. It is thickly inlaid, it is densely decorated, designed with patent of bright gold. आसमान में देखो एक से तारा सितारा का डिजाइन है, ठीक है. There is not one single orb or मतलब heavenly body which you behold by sea, but in motion are like an angel singing. So जो भी heavenly body है, जो motion में है, they are singing. मतलब heavenly body में एक musical rhythm. It is like still querying to the green-eyed cherubim. और कुछ ऐसा ही music जब heaven में छोटे छोटे cherubim कोई head angel गाना सुनाता है, this is compared to the musical rhythm between heavenly planet. Heavenly planet में जो musical rhythm है उसको compare किया गया है heaven में कोई head music singer is singing for small cherubim. Cherubim is a kind of one of the hierarchies of angel. So there is a cosmic music in the orbs in the heavenly planet that is compared to small angels sitting in heaven, and a head angel is singing music, singing for them. There is such harmony in the immortal soul. ऐसा ही कुछ हार्मोनी, ऐसा ही कोई म्यूजिक हमारे सोल के अंदर भी. तो तीन जगह म्यूजिक का बात हुआ. एक, so heavenly orb, when they are moving in the motion, they are singing, there is a musical rhythm, there is song, there is a tune, there is a rhythm to it. Next, that is compared to angel singing for young angel for cherubim. Third, such harmony, वैसा ही music, वैसा ही सुकून, वैसा ही rhythm, वैसा ही harmony, वैसा ही symphony is there in immortal soul. इस हमारे soul में भी है, क्योंकि soul immortal है. So जो cosmic music heaven में है, वही cosmic music angels लोग बाकी angels के लिए गा रहे हैं, वही cosmic music हमारे soul के अंदर. While this muddy vesture of decay, while this body made of muddy vest, muddy outlook, muddy covering of decay, मतलब ये decay होने वाला mud का जो covering है, जो body है, ये नश्वर शरीर जो है, डिस्ट्रॉय हो जाने वाला शरीर है, until it grows closes in, जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए, we cannot hear it. एक बार फिर से बोलते हैं. There is a musical rhythm in all the orbs, मतलब heavenly bodies. This is like an angel singing to smaller angels. This is again compared to that there is a musical rhythm, tune in our soul. So, but we cannot hear it.
until this muddy vesture of decay, mud माने mud, vesture मतलब structure of decay, ये decay हो जाने वाला body जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग को ये म्यूजिक नहीं सुन सकते. एक बार फिर से. So we human beings, in our soul, there is a music, rhythm, song, tune. We cannot hear the immortal song that angels sing. We cannot hear to the musical cosmic sound. We can only hear when this body grossly closing. मतलब ये जो gross body है, मतलब according to Christianity, soul is high, body is gross. तो ये जब gross inferior body खत्म हो जाएगा तब हम लोग को सुनाई देगा. Until then we cannot hear it. We cannot hear what? The sound of the heavenly planet. We cannot hear what? The angels singing to the young-eyed cherubim. Querying means singing. Angel is querying means singing to the young cherubim and angels. Such kind of music is in our soul. But while this muddy vesture, मतलब ये mud का बना हुआ body जब तक decay ना हो जाए, grossly close in ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, end ना हो जाए, हम लोग ये music नहीं सुन सकते. Enter musician. Come. So musician लोग आके गाना बजाने लगे. Sorry. Lorenzo is saying, play. Wake Dinah with thy hand. So as I told you, Dinah is a goddess of hunting moon. So Dinah is sleeping with her beloved Endymion. So ये बोल रहा म्यूजिक बजाओ और डायना को एक हाइम मतलब म्यूजिक हाइम बजा के मंत्र जैसा कुछ बजाओ ताकि उठ जाए. With sweet touches pierce the mistress ear. और ऐसा ही sweet music जब पोर्शिया आए तो उसको भी सुनाई दे. So Lorenzo is saying to musicians that ऐसा म्यूजिक बजाओ कि डायना भी उठ जाए और हमारी मिस्ट्रेस पोर्शिया भी आए तो उनको भी सुनाई दे सॉफ्ट म्यूजिक. So the music draws her home. So here the music is played to welcome Portia. Here the music is played to wake Dinah, who is sleeping with her lover Endymion. Jessica is saying, I never marry when I hear sweet music. Jessica is saying कि जब हम sweet music सुनते हैं ना, तो हम खुश नहीं होते. Jessica is saying कि when I hear sweet music, I am not happy. Lorenzo is saying the reason is your spirits are attentive. Lorenzo is saying you don't feel happy because you are trying to understand each line. You are very, very focusing on understanding the rhythm and everything. So you are focusing on the technical aspect of it and not enjoying the rhythm of it. Jessica is saying, I am never happy when I listen to sweet music. Lorenzo is saying you are not happy because you are over attentive to it. Now, if you suppose you are listening to Colaveri D and you start writing every sentence is Colaveri D, Chuma, Chuma, Gal, Vaita, Vaita, Muna, Muna. So you will not enjoy Colaveri D. You will find it's gibberish. It might be gibberish, but lots of it's one of the most heard song in YouTube. So if you become over attentive, then you probably would not be able to enjoy the music. So probably Lorenzo is right. If you become over attentive to music, then the rhythm, then the enjoyment will be lost. Lorenzo is saying to Jessica that you are very attentive, so you do not enjoy. Now he goes on to give a very thesis-like reasons why music is significant. So much so that there's a very bold statement that Shakespeare makes. Shakespeare says that one who does not listen to music should not be trusted. And in Julius Caesar, Caesar says that people who do not love music, take away, he's pointing out to Cassius, unko dur kar de. Bring people who love music. So for Shakespeare, music has been very, very significant. And he's an artist, so indirectly he is promoting one of the arts called music. And during the time of Shakespeare, there were many Orthodox people, Christian, Catholic, Orthodox people, who had very, tabooed attitude towards music. So Shakespeare is making a stand about music. Music is good, but the philosophy of music might appear boring. So, but we still have to read it. So Lorenzo is saying, ये म्यूजिक के लिए म्यूजिक के इम्पोर्टेंस को स्टैब्लिश करने की. But do not note a wild and wanton heart
a race of youthful uncounted cloth, fetching mad bounds, billowing and neighing loud. So Lorenzo is saying that even a wild and wanton herd, मतलब जो लोग wild जानवर है, okay, a race of youth, मतलब ये youthful, uncalled, unhandled colt मतलब young घोड़ा. So जो लोग घोड़े जिनको ट्रेनिंग नहीं है, okay, वो जानवर जो लोग wild है, fetching mad bounds, billowing मतलब वो jump कर रहे हैं, कूद रहे हैं. Billowing and neighing is the sound of animal. Okay, horses, other wild animals, other horses and animals. Fetching mad bounds मतलब वो लोग पागल की तरह दौड़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, घोड़ा का आवाज निकाल रहे हैं. Which is the condition of the blood. मतलब वो वैसे ही है कि वो hot condition वाले हैं, वो थोड़ी ना मंत्र पढ़ के जाप करते हैं. So Lorenzo is saying कि जानवर लोग, ओके, जो लोग यूथफुल होते हैं, अपने रेस के, वाइल्ड होते हैं, वांटन होते हैं, जंगली होते हैं, herd मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कॉल्ड मतलब ग्रुप ऑफ young horses, they're shouting, they are making lots of sound, which is the condition of the blood के animals लोग ऐसे ही रहते हैं. But if perchance they hear a trumpet sound, अगर वो भी कभी म्यूजिक सुनते हैं, so they also become very 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 quiet. So music has the power to convert every individual, including animals, to a very, very calm and quiet. So music is the hot condition of the blood. But music जो है उनके hot condition of the blood को भी calm कर देता है. वो घोड़े जो नींद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलो कर रहे हैं, okay, fetching mad bounds ने एक पागल जैसा अपना ग्रुप बना रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, जो एनिमल वाइल्ड है, वांटन है, यूथफुल है, अनकंट्रोल्ड हॉर्सेस है, वो भी जब सुनते हैं किसी ट्रम्पेट का आवाज, तो वो भी हम रुक सा जाते हैं. और एनी म्यूजिक टचेस द ईयर, जब वो म्यूजिक उनके कान में जाता है, यू शैल परसीव देम विद अ म्यूचुअल स्टैंड, सब रुक जाते हैं. विल परसीव, विल फाइंड दे हैव ऑल स्टूड काम एंड क्वाइट, एंड द सैवेज आईज, उनका वाइल्ड जंगली आईज टर्न्स इनटू अ मॉडेस्ट गेज, वो धीरे से सहम सा जाते हैं, मतलब थोड़ा रुक सा जाते हैं, शाई हो जाते हैं, डोसाइल हो जाते हैं, जेंटल हो जाते हैं. Thereby, Lorenzo is saying music can convert a wild animal into a tame animal. It has the power to convert a savage animal into a mild, modest, docile animal. I don't know true or false, but music has some power. अब ये थोड़ा exaggerated लग रहा, but music still has a power. It may not be so much as Shakespeare is saying, but music still has therapeutic value. It's kind of therapy, because the music therapy, as they say. But the sweet power of music, therefore, so this is the sweet power of music. What? That savage eyes, when a wild आंखें भी controlled हो जाती. Therefore, did feign the Orpheus drew trees. So there was a poet in mythology called Orpheus, जब वो गाते थे तो trees, stone, flood, सब कुछ सुनने लगता था. Since nothing so stockish, मतलब दुनिया में ऐसा कुछ भी stockish मैंने hard नहीं है. Somebody who is hard, full of rage, anger, gussa, but music can change his nature. Shakespeare believes that when Orpheus used to sing, stone, flood, stones, पहाड़, mountain सब आता था, तो दुनिया में कुछ भी ऐसा stockish नहीं है, कुछ भी ऐसा rude और rough नहीं है, तो म्यूजिक सुन के उसका नेचर ना बदले. The man who has no music in him, nor is moved with concord sweet of sound. So जिसके दिल में म्यूजिक ना हो, the man who is not moved with music, who is not concord with sweet sound, and who is not with sweet music, he is fit for cheating. Treason means cheating, stratagem मतलब making strategy, spoils means destruction. So Shakespeare makes a very big statement. He says a man who has no music in himself, who is not affected by the peace harmony of music, he is only fit for cheating, he is only fit for making strategies, he is only fit for destruction. The motion of spirits are dull. जो इंसान म्यूजिक नहीं समझता, according to Shakespeare, according to Lorenzo, उसका स्पिरिट मतलब उसका सोल जो है डार्क है. कितना डार्क? As dark as Erebus. Erebus is the darkest space in hell. So उसका affection, उसका प्यार, उसका लव, सब कुछ उतना ही अंधेरा और
डेंजरस है जितना एयरबस. तो हियर इज शेक्सपियर सेइंग कि एक इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है उसके अंदर का इमोशन भी उतना ही डार्क और डरावना है जितना एयरबस का होता है. लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड. सो शेक्सपियर इज सेइंग जो इंसान म्यूजिक नहीं सुनता वो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. उसके इमोशंस डार्क होते हैं. वो चीटिंग, वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, वो बर्बाद करने के लिए काफी है. जो इंसान म्यूजिक नहीं सुनता, जिसके दिल पे म्यूजिक का कुछ असर नहीं हो सकता है, वो पत्थर दिल है. वो music has a power to convert even trees, stones and floods into a human being. They can listen. Music के अंदर इतना power होता है. Music has a power to convert even a wild animal to a modest animal. So this is Shakespeare's theory on music. The last statement is very significant. Actually, when I say music, everybody perceives music in his own way. Okay. Bhajan is also music. Sufi song is also music. And there are tribal song is also music. So when we are talking about music, we're talking about all the dimensions that we can actually think about, not just Western music or Eastern music. We are talking about all music per se. So Shakespeare is making a very, very bold statement. He's saying, जो इंसान म्यूजिक नहीं सुनता उस पर भरोसा ही मत करो. Let no man be trusted who does not listen to music. So he's saying, listen to music. Music बजने लगा. Music बज ही रहा था, थोड़ा देर बजा. If you are watching it on this as an audience, थोड़ा देर म्यूजिक बजने के बाद पोर्शिया नहीं आती है. So they are still entering the garden. On the other end of the stage, that is at the end of the garden, there is Lorenzo and Jessica talking about music philosophy. Okay. And here is Portia coming with Marissa after defeating Simon. Act 4 में Portia was disguised as a lawyer. So she has come before her husband, Bassanio, and Marissa has come before her husband, Bassanio. So Portia is entering in the garden, and while she is entering in the garden, she can see that there is a candle in the castle. We are talking about 16th century, we are light light. Portia, the light we see is burning in my hall. Portia is saying, मेरे hall में, Portia के तो castle है, so Portia is saying, मेरे hall में light जल रहा है. How far the little candle throws his beam? Portia says कि छोटा कैंडल का लाइट कितना दूर जाता है, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगा. So signs a good deed in the naughty world. So she is saying कि मतलब अगर पूरा अंधेरा हो तो एक छोटा सा कैंडल भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है. It cannot be a trivial, it cannot be insignificant. Similarly, when the whole world is naughty, naughtiness is dark, evil, बुरा, तो एक छोटा सा अच्छाई का भी बहुत significant है. So here is Portia saying, if the whole world is dark, even a small light becomes very prominent. Similarly, if the whole world is negative, even a small good deed will become very significant. जहाँ सब लेट से आते हो, if somebody comes on time, it is very significant. So Portia is saying कि मेरे कासल में एक लाइट जल रहा है. एक छोटा सा कैंडल कितना दूर तक लाइट भेज पाएगा, थोड़ा ही भेज पाएगा. लेकिन अगर वो इकलौता कैंडल हो तो बहुत सिग्निफिकेंट. You know, I've often seen that Shakespeare becomes a bit philosophical in Act 5. Most of the times. So here this darkness and light is a symbol of good and evil. So if the world is clouded with evil, then a small amount of goodness becomes very prominent, significant, achieves more value. Nerissa. When the moon shines, we don't see the candle. So from here till the next 10-15 lines, we'll talk about relativity. Not the extreme relativity of Albert Einstein, but relativity in general sense. Nerissa is saying when the moon is there, the candle is not significant because moonlight is more important, prominent, powerful than candle. Indirectly, not directly, but indirectly, they are talking about Jessica. कि जब अब मूनलाइट आ गया तो कैंडल का क्या काम है, जब पोर्शिया आ गई है तो अब जेसिका का क्या काम, बिकॉज जेसिका एंड लोरेंजो वर द मास्टर्स एंड द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस.
but they have to be reminded कि वो लोग अब candle है और moonlight आ गया. Portia is saying, so does the greater glory dim the less. Portia is saying कि जब कोई greater चीज आ जाता है तो lesser चीज का वैल्यू कम जाता है. अब जब पोर्शिया आ गई है तो नेरिसा का वैल्यू नहीं है. अब जब मूनलाइट प्रोमिनेंट हो गया है तो कैंडल का वैल्यू नहीं है. अब जब सनलाइट आ जाएगा तो मेरे घर का बल्ब का लाइट का कोई वैल्यू नहीं है. सो व्हेन द ग्रेटर ग्लोरी कम्स इट डिम्स द लेसर ग्लोरी. जब महान बड़ा चीज आ जाता है तो छोटा चीज डिम हो जाता है. A substitute shines brightly as a king unto the king. So substitute king का बहुत वैल्यू है जब तक के रियल किंग ना हो जाए. So when the real king comes, the substitute king value is 0. जब रियल टीचर आ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूट टीचर को जाना पड़ता है. एंड स्टेट एम्प्टीज इटसेल्फ. फिर जब वो रियल किंग आ जाते हैं तो ये किंग हैज टू एम्प्टी इट्स पोजीशन. एज द इनलैंड ब्रुक मूव्स इनटू द मेन ऑफ वाटर. सो ये जो इनलैंड ब्रुक में स्मॉल रिवर्स है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट. बट व्हेन इट फॉल्स इनटू द ओशन, it has no significance because the river becomes the ocean. So here in sports, you're talking about philosophy, but if you try to deconstruct it, you will realize she is calling herself the mains of water, the ocean. She is calling herself the real king. She is calling herself the greater glory. And she is calling Jessica as a lesser glory, as a substitute king or the inland brook, small river. So Portia is indirectly trying to say, Jessica, I am the greater glory. I am the ocean, you are the river. I am the main king, you are a substitute king. So you should empty yourself. इतने में Jessica बोल रही है, listen, music. Nerissa is saying, it is your music, madam. ये तो आपके घर से बज रहा है. Nothing is good, I see, without respect. Respect here means in proportion, or sorry, in relation to something else. मतलब theory of relativity. मतलब सब कुछ अच्छा है कि खराब, वो किस चीज के कंपैरिजन में है उस पर डिपेंडेंट है. We think it sounds sweeter by the day. Portia is saying कि मेरे हिसाब से म्यूजिक दिन में बजता है तो ज्यादा बेहतर होता है. जैसे इस वॉल में, इस कलर के वॉल में इसी कलर का लिखने से कुछ समझ में नहीं आया. You will not see anything. But if I write with a black ink, you probably can see. तो Portia is saying कि हर कुछ अच्छा है कि गलत, but in depends on respect. और respect मतलब है उसके आसपास क्या है, in relation to something else. When everything is good or bad, it is in respect to something else. For example, there are many places in the world where you will find winter garment, sweaters, jacket. They are sold all the year round because the place is such. Okay, and we live in a place where there is hardly winter. I mean, not even for a month. So in this respect, that's not a viable business proposition here. So हर कुछ अच्छा है कि खराब depends on the situation and the surrounding. मतलब ग्राफ में बोले तो x axis of situation and y axis of time पे depend करता है कि वो x y का वैल्यू क्या है. साइलेंस बेस्ट वर्च्यू पे मैडम. नेरिसा इज सेइंग कि मैडम आप बोल रही है दिन में अच्छा लगता है, दिन में तो नॉइज ज्यादा होता होगा. नेरिसा इज ऑफ द ओपिनियन कि साइलेंस is directly proportionate or indirectly proportionate to music. मतलब जितना ज्यादा साइलेंस होगा म्यूजिक का अहमियत उतना ज्यादा होगा. Portia is saying, so here now they are talking about relativity. मैंने किस चीज के रिलेशन में कौन ज्यादा बेहतर है. Portia बोल रही कि I think the music sounds better by day. Nerissa is saying नहीं मैडम, हमको लगता है म्यूजिक अच्छा होता है जब खामोश सन्नाटे में म्यूजिक ज्यादा अच्छा है. Portia is saying the crow sings sweetly as a lark when neither is attended. The nightingale, if she sings by the day when every goose is cackling, no better magician than a wren. So here she is saying कि अगर कोई सुनने वाला ना हो तो कौवा चिल्लाए और लार्क इज ए बर्ड इन इंग्लैंड तो बराबर ही है. जब कोई सुनने वाला ना हो तो कौवा भी बराबर ही है, लार्क भी बराबर है, मोर भी बराबर है, सब बराबर. नाइटिंगेल if she sings by the day, the nightingale अगर दिन को गाएगी जहां सब बतख टक 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 टक, goose मतलब duck. So when goose are making sound and the nightingale is singing, the nightingale is like a bird called wren.
नाइट एंगल का भी क्या ही वैल्यू है जब वो घुस के बगल में पैक 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 घुस करिए नाइट एंगल का रही बहुत प्यारी वो भी पैक 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 हो रहा है नाइट एंगल इज सिंगिंग so when a night angle is singing very sweetly along with the goose she will be equal to a bird called wren. So here everything is good or bad it is in perspective to something else it is in relation to something else. So the crow is not attended neither is large. So both of them are equal. If a night angle is singing by the day, a goose is singing, so sab barabar. How things are season to the right place and do perfection. So हर चीज सीजन में सीजनल हो तो ही अच्छा लगता है सही जगह पे तारीफ हो तो ही वो परफेक्ट होता है. Now I am making this video in the month of August. Now in this month of August if I wear monkey cap along with 2 jacket and 1 pullover. So this is seasoned. This is not season in this season. मतलब हर चीज अपने सीजन के हिसाब से सीजनली अच्छा लगता है. Okay. तो अब इस विंटर कंट्रीज में जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर है सो वहाँ इफ यू वेयर डीप ड्रेस ओके देन उस सीजन में वो सीजनल चीज नहीं चलेगा. सो पोर्शिया इज सेइंग कि हर चीज अपने सीजन के हिसाब से सही. ये बोल ही क्यों रही है? Of course, it's not mentioned here, but one hint is given. She's saying कि अब सीजन मेरा है मतलब पोर्शिया का. अब ये जेसिका का सीजन नक्की हो गया. She is gone. So सीजन में सीजनल चीज अच्छा लगा वो सीजन चला और गया. Now she should go to the right praise and perfection. तभी उसको तारीफ मिलता है. हर कोई सीजन के हिसाब से टाइम के हिसाब से सब चीज करे तो सही लगता है तो टू परफेक्शन है. Peace lo the moon sleeps with Endymion would not be awakened. So they're saying, let us not talk. The moon is sleeping. Moon mane Dinah is sleeping with her lover Endymion, and she should not be awakened. Lorenzo बोल रहा था म्यूजिक बजाओ कि Endymion और वो Dinah उठ जाए. पोर्शिया बोल रही है नहीं, धीरे बजाओ ताकि Endymion who is making love to Dinah should not wake. म्यूजिक रुक गया. Music ceased when it stopped. Lorenzo. This is the voice of Portia, if I'm not deceived. अंधेरा है तो Portia थोड़ा सा लाइट है कासल में बाकी सब अंधेरा है. Lorenzo is saying this is the voice of Portia, if I'm not deceived. He knows me as a blind man knows cuckoo. Portia बोल रही है हमको ऐसे ही पहचानता है जैसे इंसान कुकू को पहचानता है. मतलब indirectly she is calling herself cuckoo, not crow. By a bad voice. अब कुकू का वॉइस तो बैड होता नहीं है. एक तरफ पोर्शिया को अपना तारीफ भी करना बाय कॉलिंग कुकू, एक तरफ उसको हम्बल भी बनना बाय सेइंग माय वॉइस इज बैड. सो दिस टू कॉन्ट्रडिक्शन मेक्स पोर्शिया वेरी शैलो कैरेक्टर इन माय ओपिनियन. शी सेइंग कि हमको लोरेंजो ऐसे ही पहचानता है जैसे कुकू बर्ड बाय हर बैड वॉइस. कुकू डज नॉट हैव अपरेंटली बैड वॉइस. अगर उसको बैड वॉइस ही बोलना था तो कोयल बोल लेती, सॉरी क्रो बोल लेती. But Portia has a very, what to say, deep-rooted habit of praising herself in a very subtle way. बहुत बारीकी से अपना तारीफ करती है. खैर करे, she is a princess. तो Portia is saying कि लोरेंजो हमको ऐसे ही पहचानता है जैसे कुकू का वॉइस लोग पहचानते हैं. मेरे तो वॉइस खराब है. My dear lady, welcome here. Lorenzo is saying to Portia, Portia, my dear lady, welcome here. We have been praying for our husbands. So Portia झूठ बोल रही है. Portia had actually gone to the court, but now she is saying that she has been or she had been praying for her husband's health. With speed, we hope to be better for our word. She's saying कि हम लोग जल्दी जल्दी प्रेयर किए हैं और I hope हम लोग का प्रेयर आंसर भी हुआ है. Are they returned? वो लोग अच्छे से वापस आ गए. Madam, they have not yet come back, but there is a messenger coming. तो बोलते मैडम अभी तक बसानियो तो नहीं है लेकिन एक मैसेज आया है कि लोग आएंगे. टू सिग्निफाई दैट कमिंग, लेट टू अनाउंस दैट दे विल कम. पोर्शिया गो इन नेरिसा गिव ऑर्डर्स टू माय सर्वेंट दैट दे टेक नो नोट एट ऑल ऑफ बीइंग एब्सेंट हेंस. पोर्शिया बोल रहे हैं कि जाओ अपने सारे सर्वेंट्स को बोल दो कि दे विल नॉट इन्फॉर्म बसानियो और ब्रसानियो दैट वी हैव बीन एब्सेंट हियर. नॉर यू लोरेंजो. सबको ये बात बता दो कि कोई भी लोरेंजो जेसिका तुम भी बाकी सब सर्वेंट को भी बता दो कि nobody will inform Bassanio and Lorenzo that we have been absent from the castle.
Lorenzo is saying your husband is at hand, madam. We are not telltale. Telltale मतलब होता है one who disclose secret. जैसे हम लोग कोई telltale नहीं, हम लोग कहानी secrets को reveal नहीं करते. Fear not. Lorenzo is saying कि your husband is at hand, मतलब husband आ चुका है. Here उनका trumpet बज रहा है, बामुला जा होशियार, बासो सलामत आ रहे हैं. The trumpet is blown. So Lorenzo is saying here the trumpet is being blown. So don't worry, we will not disclose secrets. Fear not, madam. अब ऑलमोस्ट सुबह होने वाला है. ओके, अब रात खत्म हो रहा है, सुबह हो रहा है. This is probably a symbol that good is going to start, evil has ended. Shiloh. This night may think is but daylight sick. It looks little paler. It's like day. और जैसे ये रात ऐसे है जैसे कभी कोई दिन में अंधेरा हो जाता. ये रात ऐसे है जैसे कोई दिन जब एकदम अंधेरा हो जाए. As such is the day when sun is hidden. और तब होता है जब सूरज बादलों में छिप जाता है, तो कभी कभी दिन भी रात हो जाता है. Enter Bassanio, Antonio, Grassanio on many followers. तो ट्रम्पेट बजा और बसानियो ग्रेसानियो ये लोग आने लगे. Bassanio is looking at Portia and he says, we should hold day with antipodes if you walk in the absence of the sun. Bassanio means to say that if you walk in the darkness, it will become light. It will become day. एक दुनिया में एक तरफ लाइट होता है, एक तरफ अंधेरा होता है, बेसिक ज्योग्राफी. But if Portia walks on the darkness side, इस तरफ तो लाइट होगा भी, इस तरफ भी लाइट होगा. This sounds exaggeration. This sounds almost like South Indian movie. But Bassanio, of course, is full of this kind of phrase, and this proves her over hyperbole of statements. Bassanio is saying we should hold day, मतलब ये रात भी दिन हो जाएगा. एंटीपोल में उस साइड में अगर एंटीपोल में नॉर्थ पोल साउथ पोल में दिन है तो यहाँ भी दिन हो जाएगा अगर पोल्स की होगी. ऐसा लग रहा है वो होमिकल में एडिशन की अम्मा है. Bassanio is saying if Portia is there in the darkness walking, it will become a day. Portia is saying I give light but I'm not light. और a light wife makes a heavy husband. Portia बोल रही है कि हम लाइट है, मतलब हम सोर्स ऑफ लाइट है विच गाइड्स. हम कभी लाइट कैरेक्टर के नहीं है, क्योंकि लाइट कैरेक्टर की वाइफ होती है तो हस्बैंड का दिमाग भारी हो जाता है. इट इज अ लाइट वाइफ, मतलब हल्का कैरेक्टर की वाइफ हस्बैंड को बहुत भारी बना देती है. मतलब हस्बैंड को, मतलब जो औरत का कैरेक्टर लाइट होता है उसका हस्बैंड को चिंता होते है तो उसका कैरेक्टर भारी हो जाता है. भारी मतलब एंजाइटी से टेंस हो जाता है. एंड Bassanio will never be tense for me. For God sought all means God bless all. You are welcome here, my lord. I thank you, madam. Give welcome to my friend. Now Bassanio is saying, Portia, please welcome my friend Antonio. This is Antonio, my friend, to whom I am infinitely bound. Bound माने grateful, infinitely माने endless. ये बोल रहा है इनसे मतलब बहुत कृतज्ञ, thankful है, वो भी कितना infinite maths वाला. You should be, because he was bound for him. I fear he was bound for you. Portia is saying that Bassanio, you should be thankful to Antonio because he was really in trouble for you. Anthony is saying, I am now acquitted. मैंने अब हम बाइज्जत बरी हो चुके, so I have no tensed. When I am not any more bound because I am acquitted, when I am free from the clutches of the court. Sir, you are welcome to our house. Portia is saying to Antonio, Antonio is welcome here. It must appear more than words. मतलब खातिरदारी से आपका वेलकम होगा, सिर्फ वर्ड से नहीं. Therefore I scant, मैंने डिक्रीज में ब्रीदिंग, मैंने स्पीकिंग कट्स, मैंने जबान से जो कट्स है उसको हम कम कर दे रहे, बिकॉज इट विल अपीयर इन अदर वेज. बिकॉज किसी के घर में जाने से लोग इतना बात करते हैं. ओके, बट Portia सेइंग कि नहीं, ब्रीदिंग कट्स ही नहीं करेंगे. मतलब एक तो सुबह हो चुका है, एंड होने वाला है, अभी अगर ब्रीदिंग कट्स ही करे तो कैसे हो. So Portia is saying कि नहीं, we will not have any more cutsies here. I scan this, when I decrease this, we will praise him in some other way. Grassanio, by yonder moon I swear you do me wrong. Grassanio is saying, Grassanio और नेरिसा में आर्गुमेंट हो रहा है, quarreling हो रहा है. किस बात के लिए? Portia, sorry, Nerissa is asking the marriage ring. Nerissa is saying to Grassanio कि मेरा marriage ring कहाँ? Marriage ring that you already know in Act 4. If you have not seen, you can see my video. I have even made video in Act 4. Okay, you will find it in the link.
Brasanio and Marisa, they are fighting. Why they are fighting? They are fighting for the marriage ring. Now, Brasanio has given the marriage ring to the lawyer's clerk, and Portia has taken the ring from Bassanio. So both the girls have taken the rings from the husband, but the husbands have given it to male, बाल्थासार को, लड़का को, और उसके लड़के असिस्टेंट को, मेल असिस्टेंट को. So here is a dispute or fight or argument regarding gender. मतलब कि उन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने दिया है लड़के को, लेकिन उन लोगों ने असल में दिया है लड़की को. दोनों ही अपने जगह सच ही है, क्योंकि सच में पोर्सिया ने लिया है, वो भी सच है, और सच में दिया गया है लड़के को, क्योंकि बसानी तो लड़का सोच के दिया, वो भी सच है. So Grayson is saying, by under moon I swear me wrong, in faith I gave it to the clerk. बसानी बोल रहा है कसम से मून को कसम, हम रिंग दिए हैं किसको? क्लर्क को, कोई लड़की को नहीं. Would he were guilt at it for my part since you take it. So he's saying कि बसानियों, मेरिसा, ये सब आपस में they are trying to make fun of one another. It's like creating a pre-marriage atmosphere. Of course, यहाँ जूते तो पैसों में तो कुछ नहीं होगा, but this is Western way of making us feel the festivity mood. So he's saying, for my part, since you have taken it so much for the heart, he's saying कि वो क्लर्क का भगवान करे वो सही से मेल ही ना, अगर वो मतलब अगर हम झूठ बोलते हो. Processing quarrel already, processing अभी अभी शादी हुआ, अभी अभी हम लोग आए, अभी भी quarrel चालू हो गया. Rasani is saying, yes, we are quarreling about a hoop of gold, a small amount of gold, a paltry, मतलब small ring where there was a poesy on the cutler's knife, love me but not leave me. Rasani एक तो रिंग हराया है अपने वाइफ का, दूसरा बोल रहा है एक छोटा सा रिंग के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है. मतलब पोजी ब्यूटीफुल डिजाइन वाला रिंग जो कट उस जमाने में कटलरी आइटम में, मतलब नाइफ फॉर्क में लिखा रहता था, लव मी बट डोंट लीव मी, माउंटेन्स कैन फ्लाई, रिवर्स कैन बी ड्राई, यू कैन फॉरगेट मी बट हाउ कैन आई, ऐसे कुछ लिखा होता हुआ, आई कैन लव यू फॉर एवर टिल इंफिनिटी एंड मून बैक, ऐसे कुछ आजकल जो व्हाट्सएप में लोग लिखते हैं वैसा कुछ. सो ये सेइंग कि हाँ हम लोग एक रिंग हराया है जो नेरिसा हम ग्रसानियों को दी थी, और ये कटलर पोएट्री में से लिखा रहता है, वैसे कुछ लिखा हुआ था, इट्स एन इनसिग्निफिकेंट रिंग. एक तो नालायक ने रिंग हराया है किसी भी कारण से. And then calling the marriage ring as heap of gold or hoop of gold, a paltry ring, insignificant posy cutler poetry will of course make the woman. After all, women are sensitive. Men are normally not that sensitive. They have a bit of insensitivity. So Brasanio, they are not at least so sentimental. तो Brasanio saying ये एक heap of gold के एक छोटा सा रिंग के बारे में झगड़ा हो रहा है जिस कटलर पोएट्री में से लिखा रहता है. Nerissa is saying you're talking of the value. You're saying about the value. उसमें emotion attached था, मंगलसूत्र जैसा कुछ था. You swore to me. Nerissa बोली तुमने कसम खाया था कि I will keep it forever. And at least for the honor of you, you should have kept it till that. Nerissa बोली अगर मेरे लिए नहीं तो खुद के अपने इज्जत के लिए रख लेना चाहिए था. You said that it will lie in your grave. वो दोस्त ने बोला था कि मेरे कब्र में भी ये रिंग होगा, और अभी हाथ में ही नहीं है जीते भी. So not for me, at least for your vehement, powerful oath, Grasanio, you should have kept the ring. You should have been respectful and you should have kept it. You have given it not to the clerk. God judge, the clerk will never have hair on his face. So he's saying कि तुम उस लड़के को नहीं दियो, भगवान करे जिसको तुम दिए हो उसका कभी दाढ़ी ना हो, क्योंकि वो तो लड़की होगी. Nerissa is trying to say कि Grasanio has given it to a girl. वो बोल रही है भगवान करे उस लड़की को जिसको तुमने दिया है उसका कभी दाढ़ी नहीं होगा. तो सनी बोल रहा नहीं होगा, तो लड़की का तो दाढ़ी तभी होगा जब लड़की लड़का हो जाएगी. If a woman be live to be a man, ऐसा बोल रही है अगर लड़की लड़का होगा तो ही beards होगा. Here is that gender, identity crisis. कि नेरिसा को सब पता है, but she is playing a game. ब्रसानियों को पता है कि he has given it to a boy and the audience is supposed to have a perceived fun. ब्रसानियो बोले नहीं, by this hand, हम ये हाथ का कसम खा रहे, gave it to the youth. He is a boy, he is a kind of scrub boy, एक नाटा boy है छोटू सा.
no higher than you, Jessica. बोलता वो लड़का का हाइट तुम्हारे जैसा ही था. प्रैटिंग बॉय, बट बात करता था, टॉकेटिव बॉय था. ही बेग्ड मी एज अ फी, बोलता हमको फी के लिए आप रिंग दीजिए, रिंग दीजिए. रिंग दे दिए. आई कुड नॉट फॉर द हार्ट डिनाई. बोले इतना वो लड़का मांग रहा था, मांग रहा था, मांग रहा था, उसको डिनाई ना ही नहीं बोल पाए. यू हैड टू बी ब्लेम. और से बोल रही है तुम्हारा गलती है परेशानी. आई मस्ट बी ओपन विथ यू, प्लेन एंड फ्रैंक विथ यू. यू हैव पार्टेड विथ योर वाइफ्स रिंग सो स्लाइटली, सो इजीली. उर्सिया बोली तुमने अपने हस्बैंड का रिंग को ऐसे आसानी से दे दिया. A thing struck on oath with your fingers, so riveted upon the flesh. जैसे वो फिजिक्स में रिवेटिंग होता है, दो मेटल को गर्म करके एक दूसरे में अटका दिया जाता है. तो कोर्से सेइंग कि ये रिंग तुम्हारे फिंगर में रिवेटेड हो गया था, ओथ से, लव से. And you given that marriage ring to somebody, how dare you to do this? And she's saying, look at my husband. He can never give the ring. तो बस हमने तो रिंग पहले ही दिया था. So she's saying, you have parted, separated with your wife's gift so slightly, so easily. A thing stuck on oath upon your finger. He's saying कि तुम्हारे हाथों में, फिंगर में, oath के साथ तो ये रिंग दिया गया था. It is so riveted, interconnected. I gave my love a ring and made him swear never to part with it. He's saying कि मैंने अपने beloved husband को रिंग दिया था और कसम खिलाया था, you should never be separated with. Here he stands. I dare swear he will never give this ring. पोर्शिया जानबूझ के बोली, क्योंकि पोर्शिया को तो पता ही है कि he has taken the ring. तो पोर्शिया बोल रही है, I dare sworn for him he would not leave it. पोर्शिया बोल रही मेरा हस्बैंड कभी ये रिंग नहीं दे सकता है. Nor pluck it from his finger for the wealth of the whole world. पोर्शिया बोल रही है कि पूरा वेल्थ भी मिलेगा दुनिया का तो भी बसानियो ये रिंग कभी नहीं देगा. Now in fact Bassanio, you give your wife too unkind a cause. पोर्शिया बोल रही है Bassanio, तुमने अपने वाइफ को सच में एक कॉज दिया है. A cause for grief, sorrow. If it were me, I would be mad. पोर्शिया बोल रही है अगर मैं नेरिसा की जगह होती तो मैं एकदम तो पागल ही हो जाती. सानिया अब अपने आप में बात कर रहा, बोल रहा है wish my hand were cut off and I could say क्या है, my hand is gone, so along with the hand my ring is gone. So Bassanio is saying I were best to cut off my left hand and swear I lost the ring defending it. ये बोल रहा मैं हाथ ही काट लेती तो अच्छा होता. बोलते हाथ के साथ रिंग चला गया. उन्हें हाथ बचाते हुए रिंग और हाथ दोनों चला गया. Bassanio is saying my Lord Bassanio gave his ring to the judge. Bassanio बोल रहा ये हस्बैंड अब तुम्हारा हस्बैंड भी दे दिया Bassanio. किसको? क्लर्क को. And he deserved it. And the boy I gave the clerk. So Bassanio बोल रहा है कि क्लर्क को मैंने रिंग दिया और लॉयर को Bassanio ने दे दिया. And he deserved it. And they have taken lots of pain in writing. He begged my, मतलब हमसे मेरा वाला रिंग मांगा क्या Bassanio से, उसने वो अपने रिंग दे दिया. और पोर्शिया मांगी रिंग Bassanio से. He gave the ring. Neither man nor his master would take anything except the ring. Bassanio saying कि दोनों, बस लॉयर और उसका जो सर्वेंट था हमने क्लर्क, उन दोनों को और कुछ चाहिए नहीं सिवाय ring. पोर्शिया सबको पता है उस पोर्शिया को, फिर भी पोर्शिया नाटक में बोल रही my husband you gave my ring. I hope you did not give that ring. अब Bassanio बोल रहा है कि एक तो गलती हो ही गया, झूठ बोल के दूसरा गलती नहीं करना चाहता. I don't want to add another fault of lying to it. I've already lost it, so I can't add another fault of lying it. If I could deny it, but you see, बोल रहा हम deny करे भी तो कैसे? See from my finger, my rings are gone. It is gone, it is gone. Portia is not shouting. So void is the false heart of your truth. Portia is saying कि तुम्हारा दिल इतना ही खोखला है. By heaven, I will never come in your bed with you until I see the ring. Portia बोल रही है I will never be your wife and sleep with you until I see the ring. Teresa बोल रही है I will never see you again if you don't bring me the ring. Bassanio is saying, sweet Portia, if you did know to whom I give the ring, if you did know for whom I gave the ring, you would but give the ring, how unwillingly I gave the ring. Bassanio बोल रहा है Portia तो तुमको पता होगा मैंने किसको रिंग दिया, किस लिए दिया, okay? कितना अनविलिंगली मैंने रिंग दिया. वुड नॉट बी एक्सेप्टेड बट द रिंग, मतलब और रिंग के सिवा कुछ कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, तो तुमको रिंग ही देना पड़ा. अगर पोर्शिया को पता चल जाए कि Bassanio ने किस हालात में ये रिंग दिए, किसको दिए, किस लिए दिए, then Portia would abate the strength of a displeasure. मतलब Portia would decrease her anger and
फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। पोर्सिया उसी के बात को उल्टा करके बोल रही है बसानियों को, तो बसानियों को तुमको पता होता है इस रिंग का वैल्यू, मतलब मटेरियल नहीं, इमोशनल वैल्यू। अगर तुमको पता होता देने वाले का वर्दीनेस, अगर तुमको पता होता देने वाले का ऑनर, अगर तुमको पता होता रिंग का इमोशनल सिग्निफिकेंस, यू वुड नॉट हैव गिवन द रिंग। व्हाट मैन इज देयर सो अनरीजनेबल? उसे बोल रही है तो ऐसा इंसान कि जिसको अगर समझाया जाए मैरिज रिंग तो भी वो मैरिज रिंग ही मांगेगा। इफ यू हैड प्लीज्ड टू डिफेंड इट विद रियल टर्म्स ऑफ जील, वुड नॉट हैव टेकन इट। रोसिया बोल रही है कि अगर कोई लोग पैशनेटली जील मैंने एंथुसियाज्म के साथ मना करते एंड वांटेड द मॉडेस्टी टू अर्ज द थिंग एज सेरेमनी, और बोलते कि ये सेरेमनियस थिंग है, रिचुअल्स का थिंग है, मॉडेस्टली पोलाइटली रिक्वेस्ट करते, तो कोई भी आदमी जबरदस्ती रिंग तो नहीं लेगा। नेरिसा टीचर्स मी व्हाट टू बिलीव। उनसे बोलिए हमको लग रहा है नेरिसा सही बोल रही है, तुम लोग रिंग किसी वुमेन को दिया है। सनी बोल रहे नो 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 माय ऑनर, नो मैडम, माय सोल, आई गेव इट टू ए डॉक्टर। Would you refuse to have 3000 डकट? बस सनी बोल रहा उसको 3000 डकट दिए, लेकिन वो 3000 डकट लिया ही नहीं, वो हमसे रिंग ही ले लिया। आई डिडंट डिनाई हिम, मतलब उसको मना भी कर दिए तो वो चला भी गया था। इवन ही डिड होल्ड द वेरी लाइफ ऑफ माय डियर फ्रेंड, मतलब वो मेरे फ्रेंड का लाइफ बचाया था, फिर भी वो रिंग लेके चला गया। व्हाट शुड आई से स्वीट लेडी, आई वाज एनफोर्स्ड टू सेंड इट आफ्टर हिम। बस हम ये बोल रहे हम तो दे नहीं रहे थे, लेकिन हमको रिंग देना पड़ा क्योंकि एंटोनियो सेड इट। आई वाज बिसेट विद सेम एंड कर्टसी, सो इसे हम इतना हमको खराब लग रहा था, शेमफुल लग रहा था कि एक आदमी ने एंटोनियो का लाइफ बचाया और उसको हमने सैलरी तक नहीं दिया। So he's saying I was filled with shame and courtesy. My honor would not let ingratitude smear it. He's saying कि I was मतलब ये बहुत स्मीयरिंग हो जाएगा, मतलब मेरे नाम पे एक धब्बा लग जाएगा कि मैंने लॉयर से काम कराया और उसको उसका सैलरी, उसको फीस नहीं दिया। पार्डन मी लेडी फॉर दिस ब्लेसेड कैंडल ऑफ द नाइट, मतलब आसमान का ये तारा का कसम खा के बोल रहा है, थिंक यू हैव बेग द रिंग ऑफ मी टू गिव टू द वर्दी डॉक्टर। बस आमिया बोल रहा है कि अगर तुम होती ना तो तुम भी हमसे ये रिंग लेके उसको देने की बोल देते। लेट नॉट द डॉक्टर कम नियर माई होम। और पोर्सिया बोल रही है अगर वो डॉक्टर आया मेरे घर पे मेरे बेड में, तो बेड भी है उसका, हम भी उसके वाइफ है क्योंकि उसके पास उसका रिंग है। सिंस ही हैज गॉट द ज्वेल आई लव, आई सो पोर्सिया बोल रही है आई विल नॉट कीप एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, आई विल बी एज लिबरल विथ यू एज हिम। मतलब पोर्सिया बोलना चाह रही है ये बॉडी मेरा सोल अब सब उस डॉक्टर का है जिसके पास रिंग है। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग, नॉर माई बॉडी नॉर माई बेड, नो shall I am well aware of it. Lie not a night from home. Watch me like Argus. Argus was a monster with 100 heads. तो पोर्सिया इज सेइंग कि अब तुम उनको दिन रात देखते रहो हजारों आंखों से, तुमको जैसे भी मौका मिलेगा, if I am alone and if the doctor comes I will become his wife. Upon my honor which is my, I will think the doctor as my bed partner, as my husband. नेरिसा बोल रही है तुम भी, अब वो क्लर्क आएगा तो हम उसके वाइफ बनाएंगे, बन जाएंगे, यू हैव टू प्रोटेक्ट मी। वेल डू यू सो। ऐसा नहीं बोला ठीक है, पर आई डू, आई विल मार्क द क्लर्क पेन। ऐसा नहीं बोल रहा है ठीक है तुम उसको हस्बैंड बना, लेकिन उसका पेन ही तोड़ दो। अब एंटनी देख रहा है कि मेरे चक्कर में बसानियों का नया नया शादी में झमेला हो रहा है, नेरिसा के हो रहा है। सो एंटनी सेज आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वारल। एंटनी सेइंग कि ये आई एम द सब्जेक्ट, आई एम द रीजन फॉर दिस क्वारलिंग। तो सेइंग ग्रीव नॉट, यू आर वेलकम हियर विथ स्टैंडिंग। पोर्सिया बोल रही सर इसके बावजूद भी आप यहाँ वेलकम है। बसानिया सेइंग पोर्सिया फॉरगिव मी दिस एनफोर्स रॉन्ग, इन द हियरिंग ऑफ माय मेरी फ्रेंड आई स्वेयर टू डू इवन बाय। अब बसानिया बोल रहा प्लीज हमको फॉरगिव कर दीजिए आपके दोनों आंखों का कसम कि आई गेव इट टू। पोर्सिया बोल रही अगर दोनों आंखों का कसम है मतलब कि ओथ सच्चा नहीं है। In both my eyes you see doubly yourself, that means your oath is double, that means it's not creditable, ट्रू नहीं है। Basaniya, but hear me, pardon me this fault, but I swear I say I will keep the oath. Basaniya बोल रहा अब की बार माफ कर दो, हम तुम्हारा अपने सोल का कसम खाते हैं कि अब की बार हम ओथ को निभाएंगे। अब एंटनी उनके बीच में आके बोल रहा है कि once I did lend my body for his wealth, now I'm ready to for your husband's had miscarriage, I dare bound my soul upon forfeiture. एंटनी सेइंग कि एक बार मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए
अपना बॉडी दाव पे लगा दिया, अब हम दोस्त को बचाने के लिए इतना सोल दाव पे लगा दे रहे हैं. दैट यू फॉरफिट विल नेवर ब्रेक एडवाइस मी. ही सेइंग कि अब की बार माफ कर दो. हम आई एम बीइंग द गारंटर ऑफ Bassanio. He will not break the oath under any circumstances. So yeah, Anthony is saying that once I lent the body for my friend for his wealth and he has miscarried. सब कहने मतलब fail हो गया था. I am bound again. मैंने I will be daring enough to take another oath. My soul upon the forfeiture will never break the faith advice. He is saying कि अब मेरा दोस्त कभी भी बिना कोई लॉजिक के ओथ नहीं तोड़ेगा. तब पोर्शिया क्या की, वो रिंग निकाली. तो पोर्शिया बोली, okay Anthony, you will be a surety, then give him the ring and tell him to keep it better. Anthony takes the ring and gives to Bassanio. Lord Bassanio swear to keep this. Anthony saying to Bassanio, saying, कसम खाओ कि रिंग को अच्छा से रखोगे. Bassanio, by heaven, it is the same I gave to the doctor. Bassanio बोल रहा है कि अरे ये तो वही रिंग है. वैसा ही नहीं, वही रिंग है जो मैंने लॉयर को दिया था. Portia is saying in a vulgar content कि I had it. Portia is saying कि मैंने out giving a sexual flavor to that person, I have taken the ring from him. Pardon me. So Portia is saying, pardon me Bassanio, doctor से मैंने लिया by the ring. The doctor lay with me. मैंने slept with me. As a result of sleeping with the doctor, I got the ring. Doctor तो वही है. So this joke has no meaning. I mean, no logical meaning, but since it's a joke, it can be joke. Joke, of course, not supposed to be logical. Nerissa. Pardon me, gentle Bassanio, the same scrub, not a short-heighted doctor. In lieu of the last night, he did lie with me. ये Nerissa बोल रही है कि last night I slept with the clerk, and as a result of which he gave me this ring. Bassanio बोल रहा, this is the mending of the highways in summer. Bassanio बोल रहा, अरे ये तो समर में, ये मैंने शुरुआत में ही रास्ता टूटने लगा, मैंने शादी के शुरू में ये सब होने लगा. What are the ways fair enough? We are cuckolded, even we deserved it. बोल रहा हम लोग की वाइफ शादी होने से पहले ही, मैंने समर होने से पहले रास्ता बनना पड़ रहा है और बनाना पड़ रहा है, और हम लोग ककोल्ड हो गए. ककोल्ड मतलब होता है हस्बैंड उस वाइफ इज नॉट लॉयल. तो बोलता अभी हम लोग शुरू ककोल्ड हो गए, हम लोग तो ऐसा कुछ किए भी नहीं. पोर्शिया बोली, स्पीक नॉट सो चीफली, ग्रॉसली, वल्गरली. वी आर ऑल अमेज्ड, हियर इज अ लेटर. पोर्शिया बोली, देखो यहाँ एक लेटर है. Read it at your leisure. आराम से पढ़ना. It is coming from Padua, Banerjee. You will find that Portia was a doctor and Nerissa was a clerk. Lorenzo here will witness, will be a proof that when I returned, I have yet not entered my house. ये बोली अभी तक हम रूम में भी नहीं गए, अभी तो हम गार्डन में ही हैं. And Anthony, you are welcome. I have good news for you too. Then you expect. Unseal the letter. तो उस लेटर में लिखा हुआ है, the three of your, मैंने एंटनी का 3 आर्गोसी मैंने बिजनेस शिप has come richly to the harbor. एंटनी का 3 शिप वापस आ गया. You shall not know by strange accident I got this letter. पोर्शिया बोली, आपको बता नहीं सकते कितना मुश्किल से, कितना एक्सीडेंट से, मुश्किल से बाई चांस हमको लेटर मिला. इसमें लिखा हुआ है कि एंटनी के 3 शिप वापस आ गए. एंटनी सेइंग आई एम डम. पोर्शिया बोली, वेयर यू द. पोर्शिया डॉक्टर थी, बसानियों को विश्वास नहीं हो रहा है. बसानियों बोल रही, छोरी पोर्शिया तुम डॉक्टर थी, लॉयर थी, डॉक्टर लॉ. बसानियों सेइंग, वेयर यू द क्लर्क एंड यू मेड मी ककवर्ड. मतलब तुम उस क्लर्क के साथ रिलेशनशिप करके हमको धोखा दे दी. नरीसा सिंह, कैसे धोखा दिए? क्लर्क तो हम ही थे, हम भी लड़की वो भी लड़की, एक ही तो हम लोग थे, तो कैसे धोखा होगा? स्वीट डॉक्टर, यू विल बी माय बेड फेलो व्हेन आई एम एब्सेंट, लाई विद माय वाइफ. तो यहाँ बसानियो बोल रहा है कि यू आर माय पार्टनर पोर्शिया को, और अगर हम नहीं हुए तो यू कैन लाई विद द डॉक्टर. यानी हियर बसानियो इज सेइंग दैट डॉक्टर भी वही है, डॉक्टर ऑफ लॉ भी वही है, पोर्शिया भी वही है. सो ही इज मेकिंग फन विद दैट कंसेप्ट. यू शैल बी माय बेड फेलो. सो बसानियो इज सेइंग कि डॉक्टर, मैंने पोर्शिया, यू आर माय बेड फेलो, और हम ना हो then the doctor can lie with my wife. So it's making fun. Okay, it's a joke because Portia and the lawyer is the same person. Anthony, sweet lady, you have given me life and living. Anthony बोल रहा है कि you have given me life by saving my life from Shylock, and you also giving me living. मतलब रोजी रोटी का रास्ता भी वापस बताइयो और लाइफ भी दियो. For here I read for certain that my ships are safely come to go. एंटनी बोल रहा है कि हम
सच में चिट्ठी पढ़े, मेरा सिर्फ वापस आ गया. Now Lorenzo, I have good news for you. The clerk has more comfort. मैंने good news for you. And I give him without a fee. मेरे से बोली ये हम न्यूज दे रहे बिना कोई फी के. Here I do give to you Jessica from the rich Jew Shylock the deed of gift. After his death, all that he has will be possessed by you. मतलब इस डीड में लिखा हुआ है कि शाइलोक का जितना कुछ भी था सब लोरेंजो जेसिका को हो जाएगा आफ्टर हिज डेथ. Lorenzo is saying, my fair lady, you dropped manna to the starved people. Manna was a heavenly food given to Prophet Abraham when his people were dying. So Lorenzo is saying कि जैसे Prophet Abraham के followers और Prophet Abraham को heaven से food मिला था, ये news मेरे लिए तो मन्ना है. So as starved people got heavenly food, Lorenzo is saying ये property मेरे लिए मन्ना है. Portia is saying it is almost morning. Yet I am sure you are not satisfied with all these questions and events. Let us go in. पोर्सिया बोल रही है सबको बहुत सवाल जवाब है, चलो अब हम लोग रूम में जाते हैं कासल में. लेट अस गो इन एंड चार्ज अस विद द इंट्रोगेटिव्स, मैंने क्वेश्चंस. और पोर्सिया बोल रही है चलो हम लोग रूम में जाते हैं, जिसको जो सवाल इंट्रोगेटिव्स मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछो, आई विल आंसर इट. रसानी बोल रहा ठीक है. द फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इज दैट नेरिसा शैल बी स्worn on his. रसानी बोल रहा है सबसे जाने से पहले हम ये कसम खाते हैं कि नेवर आई विल लूज नेरिसा's ring till I am alive. And he's saying, let us go to bed now 2 hours today. Whether day come, I wish the dark. He's saying कि now अभी अंधेरा और हम चाहते हैं अंधेरा ही रहे ताकि हम लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों बेड में रहे. So that I'm crouching and enjoying with the doctor's clerk. While I leave, I will never do anything as to keep the research ring more safely. And he says, the most important thing for me is to keep Nerissa's ring while I am alive. I fear no other thing than to keep the only thing safely, that is Nerissa's ring. So here the last 2 lines means that Nerissa's ring will be the most important thing for Grasanio. He will not care for any other thing than to keep the marriage ring safely. So here Act 5 ends, Scene 1. Thank you for watching the video. So if you have found this video of any meaning, so please like it. And if you have any question, comment in it. And if you find any friend who might watch this video and it can be of any help to him, so share with him. Thank you for watching it.